गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन लीडरशिप इनसाइट्स विद मी प्रशांत। हर सैटरडे की तरह आज फिर से हम एक कॉन्वर्जेशन करेंगे एक इंसाइटफुल गेस्ट के साथ और एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको सुनने में मजा भी आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। क्योंकि ये कॉन्वर्जेशन, ये शो लीडरशिप बेस्ड है, तो हम लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में मोस्ट कॉन्वर्जेशंस को रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम जिंदगी के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव दैट लीडरशिप इज ए लाइफ स्किल। तो हम प्रोफेशनल लीडरशिप के इर्द गिर्द कॉन्टेक्स्ट को घुमाने की कोशिश करेंगे, उसको रेलिवेंट बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ जिंदगी की चीजें सीखने, कुछ जिंदगी के स्किल सीखने की भी कोशिश करेंगे। So to have today's conversation with us, we have a guest who very strongly believes that stories matter. और आज की conversation is about storytelling and its relevance and importance in the world of leadership. मैंने एक बहुत पावरफुल कोट, एक स्टोरी पढ़ी थी जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कही थी कि स्टीव जॉब्स ने जब कहा that the most powerful person in the world is the storyteller, और कैसे स्टीव जॉब्स ने फिर उस सीख को इम्प्लीमेंट किया एंड ही एक्चुअली बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टोरी टेलर्स ऑफ आवर जनरेशन। और जैसे उन्होंने कहा दैट यू कैन इम्पैक्ट एन एंटायर जनरेशन एंड जनरेशंस टू कम, दैट इज व्हाट वी सी हैपनिंग। वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी कहानियां आज भी हमारे साथ। और अगर आप नोटिस करेंगे इतने सालों में जो चीज़ें हमारे साथ हैं, चाहे वो हमारे बिलीफ्स हो, चाहे वो हमारे वैल्यूज हो, चाहे वो हमारा रिलीजन हो, चाहे हमारी कोई भी मान्यता हो, इट्स मोस्टली बेस्ड ऑन अ स्टोरी दैट वी हैव बीन टोल्ड। और कुछ स्टोरीज को हमने इतना सच मान लिया है कि वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई। और जैसे हम रहते हैं, जैसे हम बात करते हैं, इट्स मोस्टली डिटरमाइंड बाय व्हाट वी हैव लर्नड एंड पिक्ड एंड बिलीव्ड थ्रू दोज स्टोरीज। तो आज की कॉन्वर्सेशन, जैसा मैंने कहा, will be about the relevance of storytelling in the world of professional leadership. And we will also try to learn how it applies to our life in general. So, to have this conversation, you're going to get someone who, as I said earlier, believes very strongly that stories matter. She's going to help us understand the relevance of stories in the world of leadership. Today, we have with us Indu Punj. She is the founder at Stories Matter, a platform to teach through stories. She's a resource person with Macmillan Foundation, Macmillan Education, Blueprint Publishers, Millennium Bookmade, and Good Luck. She's also a certified counselor with Indira Gandhi National Open University. There are many other ways where she is trying to deliver value to our society. Through corporate sessions, she does it, and she's done it for Tata Power, DDL, Mother Sons, Victoria Group, and Maruti. She works with schools through teacher enrichment programs, helping them to integrate stories into their regular curriculum. She works with universities, and she's also a YouTuber with more than 10K subscribers and 7.85 lakh views already. So this shows us how she's trying to find different ways of sharing her life experiences and living with her passion of stories matter. Now, through her journey of contribution, she has been appreciated and acknowledged for what she has done so far in more than last few decades. She's been awarded Iconic Women Creator, a Better World for All by Women Economic Forum, Vocational Excellence Award by Rotary Club Mumbai, Global Femina Excellence Award for Outstanding Contribution in Pedagogical Innovation, Inspiring Leader Award Guru Nishad Saman, Nari Astitwa Award Persistent and Passionate Educator Award. ये कुछ चीजें हैं जो उन्होंने जिंदगी में हासिल की हैं, and that she has been appreciated through for the work that she has done. So let's take this stage and get our guest with us, Ms. Indu Punj. Hello, Indu ji. A very good morning to you. Namaskar. Namaskar, Prashant ji, and thank you for having me on your show. It's indeed an honor to me. I am privileged to be part of your crowd and I would say universe. Thank you. Thank you so much, Indu ji. I have been following you on LinkedIn for a while. And when I decide to reach out to people who I want to be on my show, one thing that's very important for me is, do I connect with the energy of that person? And we have never met, but I somehow feel I gauge energies in a certain manner to see how much value is that person looking to add, how honest and committed is that person in doing what they are doing. और कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है कि यार ये इंसान सही है, I should connect and reach out to this person and get them on this show, and they can add value to our audience, value to the show for what we have created the show for.
और आप उनमें से एक हैं जहाँ मुझे लगा कि आई विश एंड होप शी सेज येस एंड शी कम्स ऑन द शो। एंड थैंक यू सो मच फॉर एग्रीइंग टू बी ऑन द शो, इंदु जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई वुड से इट रेजोनेट्स विद मी। जब हम किसी से मिलते हैं या उनकी पोस्ट फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं इट रेजोनेट्स विद आवर थॉट्स। दिस इज व्हाई वी फॉलो पीपल। इट्स नॉट जस्ट फॉर इंक्रीजिंग योर फॉलोअर्स। इट्स बेसिकली जब कोई आपको पोस्ट देखते हो और आपको लगता है या आई कैन लर्न, इट कैन ऐड वैल्यू टू माई लाइफ, और आई कैन अप्लाई इन माई लाइफ, और आई कैन सी माई स्टोरी इन योर स्टोरी, तो कहीं वो एक जो कनेक्शंस होते हैं, दिस इज हाउ वी स्टार्ट फॉलोइंग ईच अदर, एंड इनएडवर्टेंटली वी स्टार्ट लाइकिंग द पर्सन कि हाँ ये हमारे जैसा है, या जनरली यू वुड सी कि हाँ पीपल लाइक पीपल हु आर लाइक देम। तो हम हुँ, उन्हीं को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम अपने आप को उनकी स्टोरी से कनेक्ट कर पाते हैं। सो थैंक यू। आई बिल्कुल, थिंक इट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विच वर्क्स एवरीवेयर, कि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं और इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड आई लाइक the usage of the word story that I see has already happened multiple times in our conversation so far. और आपने जाने अनजाने में ये कह दिया बार बार कि our story connects with their story, we relate to their story, and then when we come together now, even today when we are talking, there is another story that we are creating. So I'm glad that we are thinking in stories, हम उस कहानी की दुनिया में खो जाएं, यही इंटेंशन है बिल्कुल। अगले 1 घंटे का। जी बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल इंदु जी आपसे ये है कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, व्हाट स्टोरी टेलिंग इज। ऐसे तो हम कह देते हैं कि कहानी कहना है, लेकिन उसकी डेप्थ को समझना कि व्हाट इज रियली स्टोरी टेलिंग, और फिर वी विल मूव द कॉन्वर्सेशन टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग कि लीडरशिप की दुनिया में उसका क्या रेलेवेंस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थैंक यू फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चन। जैसे कहते हैं कि एक मेरी बैकबोन है मेरे स्टोरीज मैटर की। बिफोर इवन टेलिंग यू व्हाट इज स्टोरी टेलिंग, आई वुड वांट टू नो, विल I will also be connecting through mental health, because being a counselor, why is it that we connect so well with stories and with each other, and what is that one aspect which pulls us towards this topic? Right from the है? beginning, the day we begin our life since inception, I would say our story begins. And all of us as humans, after if we read Maslow's law, that food, shelter, water, and acceptance, what are we all looking for? To be accepted, to be loved, and to matter in somebody's life. So storytelling basically connects us with people, and it is the building block of communication, where we share each other's experiences, we learn from them. It helps humans, they connect in a more meaningful way. You have experience, I have experience, our leaders, inspiring leaders, motivators, so they all have their stories where we can see somewhere and connect ourselves. And there is a the thing that you said, when you look at somebody's profile or listen to somebody's story, we call it neural coupling. So you start thinking and behaving the way the teller is telling to her listener or his listener. So this is how we learn to understand each other's mind, and we can connect. Stories have been, as in your introduction you have said, it's an age old way of communicating ideas, sharing knowledge, inspiring people, engaging them, influencing them. And whenever leaders they launch any movements and they want to persuade any kind of action in their audience, they tell them a story which is inspiring. So basically storytelling is used as a medium to share knowledge, to impart or give information about something, to bring out a new idea, to persuade an action. And also we are now saying that within 10 years this is going to be one of the most powerful skill to for business people, for startups, where you see all these shark tanks. What are they all doing? They're just telling their story, where there is some emotional element to it and which hooks the audience, and this is how it gets sold. So if you can Hmm, tell it, you can sell it. This is the power hmm, of a story, and that's where leaders need to use it for making their work happen, or to, I would say, engage their team members for a hmm. simple goal. Right. Thank you, Induji. Saying it in such a simple manner, yet in a manner that makes us think that, uh, you know,
It's important that we understand stories from a point of view of sharing ideas, from a point of view of sharing our thoughts, and also understanding that you need to inspire and influence people. Which means, if I get it right, you're saying that every story that a person tells, or everything that a person tells, somewhere is a story. And if you are clear on the objective of telling your Yes, stories, कहा कोई भी लीडर है, वो कभी भी कुछ भी उसने लाइफ में किया है, पास्ट में कहीं पे भी देख लीजिए, इट इज ऑलवेज स्टार्टेड विद अ स्टोरी वेयर यू आर टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. It could be 5, 10, or 10 million, whatever that volume is. You have always seen people telling stories. आपको शायद सुनने में ऐसा ना लगे कि वो एक कहानी कह रहा है, लेकिन वो एक कहानी कह रहा है, चाहे हमको वो लगे जी, या ना जी। लगे. And that is चाहे what I वो get अपनी from लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है आपके साथ टू एंगेज यू, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट अ लीडर वांट्स टू डू, टू एंगेज यू विद और टू टेक हिज और हर ऑडियंस. सो इधर वेदर इट्स टू एंगेज, टू इन्फ्लुएंस और टू इंस्पायर, सो हमारा कोई ना कोई एक मकसद होता है स्टोरी टेलिंग के पीछे, विच मे बी जस्ट, विच मे लुक लाइक कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो. बिल्कुल, बिल्कुल. और जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, अगर हम सोचेंगे ना, जब हम छोटे होते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टार्ट गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड टू इज स्टोरीज, कि माँ बाप बच्चे से, मेरी अभी बेटी है 5 साल की, तो बिल्कुल. इट्स लाइक उसको कहानियां सुनाना, उसको कहानी सुनना पसंद है. मम्मा आई वांट टू लिसन टू द फॉक्स स्टोरी, मम्मा आई वांट टू लिसन टू द बनी स्टोरी. तो उनका एक कनेक्शन बन जाता है. एंड आई नो दैट एट अ कॉन्शियस लेवल उसको ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है कि हम उसको कहानी बोल क्या रहे हैं. लेकिन जैसे आपने कहा, एट सम लेवल शी लाइक्स टू लिसन to whatever she's being told, even though she does not consciously understand exactly हो क्या रहा है, कि ये बोल क्या रहे हैं, उसको सब कुछ समझ में इस एज में नहीं आ रहा है. But there is a connection with storytelling that we have somewhere within us. And as this has been happening for many many years, जब से हम लोग exist करते हैं, तो जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा, I'm not getting recalling the words that you used, but you used some neuro connection. What were the words that you used? न्यूरल कपलिंग वी कॉल इट. सो इसमें Neural स्टोरी coupling. टेलिंग हो या जब हम दो लोग आपस में बात करते हैं, तो हम इसको एनएलपी में भी यूज करते हैं कि जब आप दूसरे की बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आप देखेंगे, थोड़ी देर बाद अगर उसने ऐसे किया तो आप भी इनएडवर्टेंटली ऐसे करते हैं. सो दिस इज न्यूरल कपलिंग, कि आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से बात करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये है कि चाहे मैं किस तरह की ऑडियंस के साथ हूँ, I have to merge or blend myself according to them. You know, this is the art of storytelling, कि मैंने अपनी ऑडियंस के हिसाब से अपने आप को, अपने बिहेवियर को, अपनी लैंग्वेज को, without using those heavy jargon words. As you mentioned about your daughter, मेरा तो काम ही छोटे बच्चों से स्टार्ट होता है. सो वेयर आप बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स जो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, आप छोटे से बच्चे को कैसे समझाओगे कि बी कंपैशनेट, बी काइंड. आप छोटी सी कहानी सुना दीजिए कि डॉग के साथ उसने उसको खाना देता था, उसको अच्छे से केयर करता है, या हम सेल्फ एक्सेप्टेंस की स्टोरी सुनाते हैं. तो अब इतना बड़ा कॉन्सेप्ट समझाएं बच्चे को कि एम्पैथी क्या होती है, पर आप स्टोरी सुना दीजिए 2-3 लाइन की और वो समझ जाएगी कि यस, व्हाट ही मींस इज दिस. सो बड़े सी चीज को सिंप्लीफाई करना भी स्टोरी है. दैट इज योर आर्ट, कि आपने बड़ा एक इतना बड़ी बात कह भी दी और सामने वाले को पता भी नहीं चला और मैसेज कन्वे भी हो गया. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. और क्योंकि हम लोग स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं, एंड यू ब्रॉट आउट दैट इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स ओवर द नेक्स्ट डेकेड और टू. It's important for businesses, for leaders, in whatever aspect they are, चाहे वो existing corporates हो, चाहे वो SMEs हो, चाहे वो startups हो, जो भी हैं. It's important to understand the power of storytelling. It's important to understand कि when we talk about storytelling, हम लोग वो बच्चों की कहानियों की बात नहीं कर रहे हैं. We are talking about the art of storytelling, how leaders need to use it in their own manner. And you give a very beautiful example कि शार्क टैंक में हो क्या रहा है. अगर आप देखेंगे, जब आप इन्वेस्टर के पास जाते हैं, यू हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग देम ऑन बोर्ड एज इन्वेस्टर्स. तो आप एक कंपेलिंग स्टोरी लेके जाते हैं जहां उनको लगे कि आपके स्टोरी में दम है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दम है, और एज एन एंटरप्रेन्योर जो आपकी जर्नी रही है, जो आपका रीजन है वो बिजनेस शुरू करने का, उसमें दम है. और वो आप एक कहानी के थ्रू जाके अपने 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, जिसको एक सेल्स पिच कहा जाता है या एक इन्वेस्टर पिच कहा जाता है, वो अगर
देखा जाए तो है क्या, सिर्फ एक कहानी है। तो बिल्कुल। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप, अदरवाइज पीपल डोंट रिलेट टू इट, दे लाइक यार स्टोरी टेलिंग तो ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल दुनिया में मैं कहानीकार बन के क्या करूँगा? लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हम प्रोफेशनल दुनिया में कहानीकार हैं। एवरी कन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ उसी स्टेटमेंट पे जो आपने पहले कहा कहानियों के बारे में, कि हम अगर कुछ भी करते हैं, चाहे वो लीडर्स हों या हमारी ज़िंदगी में हो, या मुझे अपने माँ-बाप से कुछ चाहिए, तो मैं एक कहानी बनाता हूँ कि मैं उनको जाके ये बोलूँगा, इससे उनको ऐसा लगेगा और फिर मुझे ये मिल जाएगा। अगर मेरे को एक इंटरव्यू देने जाना है, तो मैं ये कहूँगा, ये कहूँगा, उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उनको लगेगा कि हाँ, मेरे में वो है जो उनको चाहिए, तो ये कहानी बना रहा हूँ। तो कहानी का मतलब झूठ नहीं है। बहुत बार लोग ये समझते हैं कि कहानी का मतलब है कि यार क्यों कहानी बना रहा है? तो Hmm. हम लोग एक झूठ की बात नहीं कर रहे हैं। आई थिंक व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ हाउ डू यू कन्वे योर आइडियाज़, स्ट्रक्चर योर आइडियाज़ इन अ मैनर वेयर एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इज़ स्टोरी टेलिंग। मेरे दिमाग में तो अभी यही चल रहा है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, वो एक कहानी ही चल रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। जो हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, जो पूरी मीडिया है अभी, वो क्या कर रहे हैं? स्टोरीज तो बेच रहे हैं अपनी। आप आपका एक इमोशनल एंगल हिट करते हैं, जहां पे चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो कोई कपड़ा हो, चाहे कॉफी हो, सो आई विल बी ब्रिंगिंग दो स्टोरीज which somewhere they inspire you to connect ki okay, that vision is not selling just a product. There, it is a people हुँ, business where they are trying to connect the emotion of the person. They are trying to tap or hook your emotion. जैसे ही आपकी हो गई, आप फट से वो, अब चाहे टेलीविजन ले लीजिए, वाई दे आर मेकिंग इट एवरी डे देयर इज अ न्यू मॉडल बीइंग लॉन्च्ड, ताकि वो उसकी कस्टमर की क्या या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं कि जगह कम होती जा रही है। आर फ्लैट्स आर, वी डोंट हैव इन आर मेट्रो सिटीज वेरी बिग बंगलोज। अब उसी, और हर कमरे में टीवी आ गया है। उसको क्या कर दिया उन्होंने, अभी जो मैंने लेटेस्ट, इसलिए मुझे ये एग्जाम्पल ज्यादा याद आ रहा है, कि उन्होंने उसको एक पेंटिंग की फॉर्म दे दी। वो आप जब उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, व्हेन यू आर नॉट प्लेइंग योर टेलीविजन, इट लुक्स लाइक अ पेंटिंग। द सैमसंग न्यू मॉडल विच इज लाइक अ फ्रेम, एंड वो ऐसे आप कह ही नहीं सकते कि वो पेंटिंग नहीं लगाया। सो स्पेस यूटिलाइजेशन, उन्होंने आपको क्या नाइस। स्पेस भी दे दी। टेलीविजन भी चल रहा है इतना बड़ा, वट एवर साइज यू चूज टू बाय एज पर योर रिक्वायरमेंट, पर उन्होंने आपको हुँ, ये भी बोला कि इट इज ड्यूअल पर्पस। सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट। तो कहानी हुँ, में जब हम कहते हैं मैसेज क्या है, वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तभी आप इंस्पायर होगे उसको लेने के लिए। सो इट इज बिल्कुल। एक्चुअली इनिशिएटिंग अ एक्शन विच इज हुँ, अ प्रोडक्ट यू वांट टू बाय। तो यही तो, बाय ये सारी स्टोरी टेलिंग स्ट्रेटेजी तो है मार्केटिंग में। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्योंकि हम लोगों ने इस शो का जो कॉन्टेक्स्ट है, इट्स मोस्टली अराउंड लीडरशिप एंड इट्स मोस्टली अराउंड प्रोफेशनल लीडरशिप दैट हैपेंस इन बिज़नेसेस। आपने स्टार्टिंग में कुछ टाइम पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, आपने कहा कि जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स मैसेज डिलीवर करना हो, जब भी आपको कुछ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेट करना हो, चाहे वो एक चेंज कम्युनिकेट करना हो ऑर्गेनाइज़ेशन में, चाहे वो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो अच्छी या बुरी, अ, it is best to convey that through stories. It's best to convey that through in a manner जहाँ आप डायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, आप उसको एक स्टोरी के थ्रू कह रहे हैं। एंड नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट आपके साथ-साथ, तो मैं ये चीज़ दिमाग में ला पा रहा हूँ कि स्टोरी इज़ नथिंग बट अ कॉन्टेक्स्ट that you create of the end message that you're going to deliver. Would you agree to it? यस, एब्सोल्युटली। तो मैं जो कहने जा रहा हूँ, वो मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये लीडर्स बहुत बार मिस कर जाते हैं, कि सीधे जाके कह दिया जो कहना है कि अब से ऐसा नहीं होगा या अब से वैसा नहीं होगा, क्या हम But इसके they बारे में थोड़ी digress from the context or the message, that the end product they forget. हुँ, This is the effective communication, I would say. Storytelling हुँ, is also, I would say, effective communication. This is how हुँ, you would see all those good storytellers that we talk about. You've been repeatedly talking about Steve Jobs. So he could, in 30 words, or you can say in one Twitter statement, he could convey or launch his new product. So when he बिल्कुल, launched his notebook, is the thinnest notebook in the world. That was his tagline, and it became headlines, and that became a message to the whole universe that it's the thinnest notebook. So to be able बिल्कुल, to say a long
story into brevity of expression that we call it. That's again art of storytelling. So conveying mm, a message in a shortest possible way. mm, mm. So Great. he Now, was known for his this art. yeah, he definitely was, no doubt. नाउ आपने जैसे हमने बच्चों की बात की कि बच्चों को हम कहानी सुनाते हैं। अगर हम बच्चों को एक वैल्यू सिस्टम समझाना चाहते हैं, तो उनको शायद उस एज में वो डायरेक्टली समझ आएगा नहीं कि क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट व्हेन यू डू इट थ्रू स्टोरी टेलिंग, दे ग्रैब द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट एंड दे स्टार्ट इम्बाइबिंग एंड लर्निंग दैट वैल्यू। अगर हम इस सेम चीज़ को एक ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें, फ्रॉम अ विजन, फ्रॉम अ वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज़ every organization has a vision, or let me say is supposed to have a vision. It's a very important part of being an organization, being organized. And then every organization is supposed to have a set of values that will drive the entire culture of the organization, and we work within those boundaries of those values in an organization. तो अगर हम विजन और वैल्यूज की बात करें, तो मेरा आपसे ये सवाल आता है कि हाउ कैन लीडर्स कम्युनिकेट द विजन एंड वैल्यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू स्टोरी टेलिंग? अगर आप कुछ एग्जांपल्स दे सकें तो समझने में आसानी हो। Thank you. I would definitely take example from somebody whom I would say everybody can connect in their daily life. So I'll talk and pick up a story where we'll talk about president and founder of Starbucks, Howard Schultz. He, in his vision to starting Starbucks, he brings his backstory within 30 seconds. He will tell you about how it started. He talks about his father, his life, his rags, and one more element you would see in every leader's story would be rags to riches. So what he in his stories tries to bring, that first of all, he was not the original. People think he was the founder, the original founder of Starbucks, whereas he joined Starbucks as an employee. And his father, Fred Schultz, I would say, he was working as a delivery boy in a diaper factory. Somehow, unfortunately, his father met with an accident and he was bedridden for quite a long time, where the family had to suffer, and they were never given any health and health insurance by the company he was working, his father, I mean to say. And then there was no employee compensation. So Howard Schultz, when he was growing up and even as an employee, he always used to think, if I could ever make a difference in people's life, I would take them along with me and I would make a difference by taking care of them, by giving them life of dignity, where they can value themselves, where they can see themselves as part of the organizations. And they are the real stars of the company. Your company actually is with your employees. So, what he did when he started working with Starbucks, he was sent to Italy for a trip. And there he understood that what Starbucks was doing was the business that they were in was not the right business. So he wanted to create a culture around coffee. He wanted to bring the romance of coffee where there was a space between work and home, the third space, where people connected over a cup of coffee and every communication was around coffee. So he changed that, and when he brought this concept to his original founders, they rejected his idea. This is the second element in every story where there is a conflict. So he Mm, went and he started his own cafe bars when America people had not even heard of cafe latte. He started his coffee bars and he started growing that culture, or he called it symphony of coffee. And he started doing well. And by 97, Starbucks, the original one, was facing financial crisis. They had to sell it to Howard Schultz for 3.87 million. And that is when he became the founder and president of Starbucks. That's when he says, whenever you bring any organization, there has to be value based. In his company, if he is now having 1 lakh 80,000 plus employees, each and every employee has a health insurance. He brought in the concept
even the temporary ones, or even the ones who are not full time employees, they also get health insurance. They are given employee compensations. They are part of the sharing. They are sharing the profit basis. Everything, all those concepts he brought in. So he says, like, it is not just the product. The coffee is just the product, but we are in people business. We have to understand that we are connecting people over a cup of coffee. They come, meet, greet, socialize over there, and that's how Starbucks has become. We are not going just to sit and have coffee. We always hold our meetings there. We have some agenda. So that's where he has succeeded as a leader, to bring his vision of taking care of his employees, giving them all the facilities, treating them with dignity, and bringing them that, giving them that feel that we are part of it. Hmm. You know, every person, and even Oprah Winfrey says, when his her father used to tell her, she would often ask her father, why do you call people around you, the ones whom you give, आप उनको हेयर कट देते हो और उसी को क्रिसमस डिनर पे बुला लेते हो. सो ही सेज कि हर इंसान हमारे जैसा है, और वो आपकी स्टोरी में दे वांट टू मैटर इन योर स्टोरी. तो जब हम लोगों को ये महसूस कराते हैं कि यू मैटर, यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर एक्सेप्टेड, लव्ड, दैट इज व्हेन दे स्टार्ट showing loyalty to the organization, and that is what is missing in our culture today. They are not Hmm. felt, they don't feel that sense of belongingness. This is the reason they end up quitting or changing jobs. Hmm. Thank you. Thank you, Induji, for uh, again, for the last 5 to 7 minutes, I was immersed in what you were saying because you explained it through a beautiful story. And thank you for giving us a demonstration also that how you need to tell stories and engage an audience and speak in the context that we are speaking in so that it delivers a message in the end. So you delivered a message, you told us a story. We got to know about that person, we got to know about how Starbucks was founded, we got to understand how employees are important, we got to understand how a vision in the organization is important, we got to understand how the leader of the organization needs to be very sure of why is he creating that organization and needs to flow through that message for the entire organization and making it a value of the organization. And I think that's what Starbucks stands even for today. मुझे याद आता है जब मैं अगर मम्मी के साथ कभी स्टारबक्स या कॉफ़ी डे कहीं भी जाता हूँ ना, तो वो कहती है कि क्या है यार, ये क्या, इसके क्यों 200 रुपए, इसके क्या 300 रुपए, इसके क्यों 500 रुपए देते हो, क्या है ये सब? Yeah. And it's understandable why she would think that way, because that's her story in her mind that she's running, that she's thinking from. But it's important for everybody to understand what you said, that a business is about a product, it is about a service that you provide, but that's just a vehicle which is carrying the core of a business, which is nothing but people. चाहे वो आपके अपने लोग हों, जो एम्प्लॉइज़ आपके साथ काम करते हैं, चाहे वो आपके कस्टमर्स हो, it is a people's game in the end. And if you understand that, if you're able to understand how to get people together, that is where your business will become powerful. चाहे वो आपकी एक छोटी सी टीम हो 5 लोगों की, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन हो, जैसे आपने 1.8 लाख एम्प्लॉइज़ की कही। अगर आपकी वो कहानी स्ट्रॉन्ग है और अगर आप उस कहानी पे डटे रहें और उन वैल्यूज़ पे पर्सिस्टेंटली बने रहें और उन वैल्यूज़ से शेक ना हो, मूव ना हो, तो वो Bill. ऑर्गेनाइज़ेशन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। So now for a leader who is listening to us and has understood ki ha Induji, I understand that storytelling is powerful. I understand that I need to know storytelling. I also now want to understand from you कि मैं करूँ तो करूँ कैसे? सो क्या मेरे में ऑलरेडी वो चीज़ें हैं जिसमें एक स्टोरी टेलर मैं बन सकता हूँ, या मैं ऑलरेडी एक स्टोरी टेलर हूँ? हाउ डू आई जज दैट एंड बिल्ड माय जर्नी ऑफ बिकमिंग ए स्टोरी टेलर इन टर्म्स ऑफ skills and qualities, क्योंकि we mostly speak in this language ना, in the professional world this is what happens कि इसके लिए क्या skill चाहिए, क्या experience चाहिए, क्या attitude चाहिए, ये एक language बन गई है, हमारे nomenclature जो बन गया है. So if you can also speak in that language to the leaders, what skills or qualities do you think a leader should possess to be or become an effective storyteller? थोड़ा सा इसमें मैं अपने एलिमेंट्स लाऊंगी, थोड़ा जो मैं पढ़ के और अपने मेंटर्स से सीखी हूँ. सो सबसे पहला जो मुझे एज अ स्पीकर और एज अ स्टोरी टेलर लगता है कि बिल्डिंग कनेक्ट विद whosoever you are speaking to.
अगर आपने कनेक्शन नहीं बनाया शुरू में, तो कहीं ना कहीं that essence of the story will be lost. So first and foremost thing is to build connection. How do we build connection? With our gestures, with our body language, with our positivity, with the smile, with the message, with the quote, or starting with an event in your life. So whenever we bring a story to audience or our employees, and we take it from any point of view, start with an event from your part of, your life, कि कैसे मेरी जिंदगी में ये हुआ, and this is where people will see their story in your story. And second, for leaders, are specifically for the ones who are holding positions and they want to connect with their teams, सबसे important element जो आज की डेट में, और आपने ये buzzword कह सकते हैं, empathy एंड इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, जब तक हम सामने वाले की एम्पैथी को भी मैं अब इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, वेयर वन इज कॉग्निटिव एम्पैथी, व्हेन यू टॉक अबाउट हाउ द अदर पर्सन थिंक्स, क्या आप अपनी टीम के मेंबर्स की थिंकिंग प्रोसेस को समझ पाते हो? जब मैं आपकी थिंकिंग को समझ पाऊंगी, मैं वही बोलने की कोशिश करूंगी और मैं वही वर्ड्स चूज करूंगी जो आप सुनना चाहते हो. सो दिस इज लाइक टैपिंग द राइट पोटेंशियल, कि अगर मैं सीनियर लीडर से बात कर रही हूँ, या मैं मिडिल लेवल से बात कर रही हूँ, या मैं स्टार्टर, बिल्कुल जो अभी ओरिएंटेशन डे टाइप है, तो उनके थिंकिंग प्रोसेस, व्हाट लेवल एम आई स्पीकिंग टू. So this is how I have to build my connection, keeping their cognitive empathy in mind. Then is emotional empathy, how they feel. अब जो न्यू आए हैं वो बेचारे घबराए हुए हैं, दे आर जस्ट वांटिंग टू गेट एक्सेप्टेड, टू लव. तो उनको हमें कंफर्टेबल फील कराना है कि बेटा अभी हम, वी विल होन योर स्किल्स, यू विल बी हैंड, you will be guided, there will be mentors to take you through, and will cross bridges as they come. एंड वो बच्चा ये नहीं सोच रहा कि मुझे समुंदर में लाके फेंक दिया, अब मुझे ही करना है सब कुछ. सो दिस इज व्हेन यू कैन जस्ट फील देयर फीलिंग्स, कि we understand we also started somewhere here. And third is actually having compassion, to concern, as I just said in my previous answer, कि आपको एक्चुअली कंसर्न है अपने एम्प्लॉयज का, अपने टीम मेंबर्स का. अगर वो बीमार है, क्या आप हमेशा डाउट में ही रहते हैं कि झूठ बना रहा है? हो सकता है. Try, and this I always tell, even in my trainings for to teachers and principals also, that you first need to understand the problem, the grassroots. You have to reach there and show concern, that I care. When I care, and when the employee knows that he has his boss's back is there, and there is a pillar of support, come what may, I'll be supported, then is the time you go for, you can take action and you can inspire people to take action. अगर मुझे खुद को हमेशा ये मेरे ऊपर लगेगा कि मेरा बॉस मेरे पे डाउट ही करता रहता है, and there is no concern, he does not take my words, and he is always judging, so there you lose that value. You feel, threatened in your own organization. You don't feel at comfort. So empathy सबसे बड़ा, पहला is connection, then is your empathy of 3 types that I have talked about. Then be original, be authentic. Don't keep telling, don't be somebody else. Your story, people want to listen to you. अगर मैं अपनी कहानी में किसी सबकी तो सुना रही हूँ, पर लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं चलता कि who is she, what is her value system. तो आपकी वैल्यूज, आपकी है पीछे बैकग्राउंड स्टोरी, बैक स्टोरी क्या है, आप कहाँ से आते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट. हैव बी ट्रांसपेरेंट इन योर डीलिंग्स. Don't be manipulative, playing games in your own organization. So while telling stories, the more authentic and transparent you are, and you talk about your struggles, your failures, and you are also not born with some silver spoon, you didn't have great mentors to guide you, and you dared to dream to be here, and you made it happen. And this inspires. If he could do it, I can do it too. Give them this. And end result always should be to motivate them, to inspire them, to and influence them to take an action, which is the common goal. The organization, we all, organization grows and employees grow together. If employees will be against, if these two are into friction, everything will sink. So they have to be as with each other to take the organization forward. For that, they have to speak same language, they have to have same vision.
So this is why we say to each employee they should have single pitch. They are the representatives of when we talk to an employee from Tata. They all speak same language. You will see they are very satisfied and happy, even if salaries are not too high. But there is a sense of achievement where they feel we belong here. We are this Mm, family, that thing that we are a family, we are working towards a single goal, which is the organization's achievement, and we grow mm, together. And mm, this is where your story has to have all these elements, where you talk about all of it, and your people should feel connected with you in their thick and thin. and the word that kept coming, kept repeating in the conversation that you were having now was connection. And when you were speaking about this, I was just thinking, as a leader, कि वो connection बनेगा कैसे? If I want to connect with people, if I want to speak their language, if I want to say something that they will relate to, I should know what will they relate to, which means I should know enough. And for me to know enough, I need to care. If that care is not genuine and authentic, then it will show up. आज नहीं तो कल वो दिख जाएगा कि वो authenticity नहीं है. That is where your authenticity comes into picture. If I don't genuinely empathize with another person, then I will not be able to relate to them at an emotional level, nor will they relate to me at an emotional level. तो मेरी स्टोरी क्राफ्टिंग जो है वो सही नहीं होगी, क्योंकि मैं उनके साथ वो कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाया. तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है, फ्रॉम अ लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज मिसिंग. I think in this run of mill activity that is heavily focused on performance and results, कि मतलब किया क्या और एंड रिजल्ट क्या हुआ, किया क्या और एंड रिजल्ट क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये चीज हम लोग भूल रहे हैं that it's important to talk to our people. It's important to listen to their stories, कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो कौन है, वो कहाँ से आए हैं, क्या करना चाहते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ज्वाइन किया है, उनके क्या सपने हैं, उनकी क्या समझ है. और फिर उनका करियर पाथिंग अकॉर्डिंगली अगर आप बिल्ड करेंगे, तो जो स्टोरी टेलिंग की आप बात कर रहे हैं इंदु जी, वो तभी हो पाएगी एज अ लीडर. आई विल बी एबल टू क्राफ्ट एन इंस्पायरिंग कंपेलिंग स्टोरी ओनली इफ आई एम एबल टू कनेक्ट विद माय ऑडियंस. लेकिन Absolutely. अगर मैं अपने ऑडियंस को समझ ही नहीं रहा हूँ, अभी जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं लीडर्स से, अभी हमारी कॉन्वर्जेशन हो रही है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीडरशिप. अगर हम लोगों की कॉन्वर्सेशन एक माँ-बाप और बच्चे की कॉन्वर्सेशन पे ही सीमित रह जाए, तो हमारी ऑडियंस कहीं न कहीं डिस्कनेक्टेड या चीटेड फ़ील करेगी कि यार, लीडरशिप की कॉन्टेक्स्ट में तो ये चीज़ आ ही नहीं रही है, ये लोग सिर्फ़ उस लेवल पे क्यों अटक रहे हैं? दैट मीन्स देन वी आर नॉट कनेक्टिंग विद आवर ऑडियंस, और ऑडियंस विल फ़ील लाइक यार, ये तो कुछ माँ-बाप बच्चे के डिस्कशन चल रहे हैं, लीडरशिप की बात हो नहीं रही. So that is why we are bringing everything into the context of leadership, because the expectation that we have set with our audience is कि हम लीडरशिप की बात करेंगे. और वहीं हम दोनों कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको ज़िंदगी और लीडरशिप दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर सकें. आई थिंक दैट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ कनेक्शन, टू नो योर ऑडियंस वेल. और वो तभी होगा ऑल्सो अगर आप अपनी एक चीज ऑडियंस मैं को. और अभी आपकी बातों से ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप हमेशा ये कहते हो हम भी तो करते थे, जैसे कई बार पेरेंट्स करते हैं बच्चों के साथ, जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैं ये करता था. बट यू हैव टू सी कि सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं, और उनकी स्ट्रगल्स, उनकी फाइट्स, उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स डिफरेंट लेवल की हैं. दे हैव टू फेस सो मच ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स. हमारे जमाने में जो नहीं थे वो उनको फेस करने पड़ रहे हैं. तो एज लीडर्स ऑल्सो वी हैव टू सी दैट थिंग्स हैव चेंज फॉर देम. मे बी अभी जो इतना लाइफ हैज बिकम सो टफ फॉर पीपल, तो वो हम जब तक उनकी समझेंगे नहीं स्ट्रगल्स को, तो हम कनेक्शन फिर भी नहीं बना पाएंगे. अगर मैं हाँ, ये पाएंगे. आपसे रिलेट ही नहीं कर पाती और मेरे अंदर हमेशा ये रहता है, मैंने बहुत बार, अभी मैं गई हूँ जैसे आपने मेरे उसमें इंट्रोडक्शन में बोला है, तो आई सी दैट थिंग मिसिंग कि क्या हो गया मैडम, हम भी तो करते थे 8-9 घंटे काम, अब आजकल के बच्चों को तो करीब करना होता है. पर तब आपको नहीं पता था कि वो बंदा अगर मानेसर जा रहा है या 3 घंटे एक साइड में ड्राइव कर रहा है और बेचारा 2 घंटे ट्रैफिक में फंसा है, वो आपको नहीं पता, क्योंकि आपका ऑफिस उस समय शायद इतना दूर नहीं था, और हो सकता है कि उस समय में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी. तो अगर बिल्कुल, हम समझेंगे तो हमें रिलेट कर पाएंगे. अगर बिल्कुल. हम नहीं समझना चाहते तो हम उसको वी कॉल इट लाइक डिनाई कर दिया, आप तो डिनायल मोड पे हो. तो फिर वो बेचारे, मैंने एक और चीज जो अगर मैंने टीम लीडर मेंबर्स के साथ मेरी वर्कशॉप्स होती हैं, तो वन थिंग दैट आई फील मिसिंग इज दैट दे आर नॉट एबल टू असर्ट.
they are not able to project their requirement, or they don't learn to say no to their bosses. तो वो बाउंड्री सेटिंग, वो कहते हैं मैडम फिर तो कल ही सुबह मुझे आ जाएगा, आई विल बी इन हिज बैड बुक्स, कि अगर मैंने 12 बजे मुझे काम आ गया, अगर वो सब सुन रहे हुए यहाँ पे, सब, आई वोंट नेम द कंपनी, दैट एचआर पर्सन, ही सेज अगर मुझे 12 बजे रात को आता है और सुबह 9 बजे वो सबमिट करना है, तो आप बताइए कि 10 बजे तक काम करके आके 12 बजे, और 12 बजे से सुबह के 9 तक मुझे वो 40 पीपल, हाउ डू आई शो, वेयर डू आई एम्प्लॉय देम फ्रॉम? बट आई कांट से नो. The moment I say no, I can't do it. I am in his bad books. So this is where बिल्कुल. also I would like to request leaders, that I have now got this platform to voice my opinion, that please be empathetic and give them enough time where they can genuinely produce a good result. If you will ask for such things, there will be flaws, and which are going to bounce back, because those people who will be employed in those overnight, I'm sure they are half of them, or maybe then they himself said they don't even join after being trained. They don't join. That's the another problem in companies today. That people have the ability to say no, we are not joining you. तो ये सब कहाँ पे बिल्कुल. प्रॉब्लम है? क्योंकि आपने पहले अपना होमवर्क, यू हैवंट डन प्रॉपरली, यू हैव नॉट गिवन अंडरस्टूड द इशू. ग्रास रूट ट्रू. लेवल ठीक नहीं होता ना तब. बिल्कुल. और जैसे आप ये बातें कह रहे हैं इंदु जी, यू नो, आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ one is storytelling, because I have come to a very strong understanding that it's stories that we keep telling ourselves all the time. मैं जो भी आपसे अभी बात कर रहा हूँ एक कहानी है, मैं जो अपने आप को बोल रहा हूँ जब आप बात कर रही हैं वो भी एक कहानी है. So it's a story that I'm telling myself. So from a storytelling point of view, I think it's very important for leaders and for everyone, specifically for leaders because that's who our audience is, to become aware of what stories are you telling yourself about leadership. आप अपने आप को क्या कहानी सुना रहे हैं? क्योंकि अगर मैं, आपने जैसे पहले कहा दैट पेरेंट्स कहते हैं कि यार मैंने तो इतनी स्ट्रगल देखी है, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, नदियाँ पार करके जाते थे, किश्तियों में जाते थे, मोमबत्तियों के नीचे पड़ते थे. उनकी स्ट्रगल्स अपने लेवल पे सही रही होंगी, बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जैसा आपने कहा कि दुनिया, टाइम, समय धीरे-धीरे बदलता है, and more than the physical things which are much more comfortable today compared to how things have been, and they're just improving every day, every month, we need to empathize with people, be it our children or our team members or even ourselves at a psychological level. आपने इनिशियली मैस्लोज हायरार्की की बात की, और मैस्लोज हायरार्की में आप बहुत बार देखेंगे लोग फिजिकल नीड्स पे रुक जाते हैं, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आज की दुनिया में जहाँ फिजिकल नीड्स मोस्टली, एटलीस्ट इन आवर डोमेन, आई विल नॉट टॉक अबाउट द एंटायर वर्ल्ड, जो हमारी ऑडियंस है एटलीस्ट वो उस तबके से आती हैं जहाँ फिजिकल नीड्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ. सो इट्स मोर साइकोलॉजिकल इन नेचर, कि आप साइकोलॉजिकली अपने लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपकी टीम मेंबर्स हों. व्हाट स्टोरी आर यू टेलिंग योरसेल्फ? आर यू टेलिंग दिस स्टोरी टू योरसेल्फ कि मैंने बड़ी स्ट्रगल्स देखी हैं तो तुमको भी स्ट्रगल्स देखनी है, सो यू शुड आल्सो गो थ्रू द चर्न बिकॉज आई वेंट थ्रू द चर्न इन माय टीम. जब मैं एक टीम मेंबर था, मैं ये किया वो किया, मेरे लीडर ने साथ मेरे साथ ऐसा किया, हमारे ऊपर तो चिल्लाते थे, तुम्हारे ऊपर तो कोई आज चिल्ला भी नहीं सकता, तुम एचआर के पास चले जाओगे. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपने अगर स्ट्रगल्स देखी हैं, यू हैव अ चॉइस as a leader to tell yourself a story that okay, this is what I went through, but I will be different from the experiences I had in my journey. I will be the leader I wish I had. That is how I will see leadership. या दूसरी कहानी आप अपने आप को ये बोल सकते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, तुमने क्या देखा है, and you want your people also to go through the struggles that you have gone through. You want to make their life difficult because your life was difficult when you were a team member. That's how your leaders made it. तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल लेवल पे हम कहानी की बात कर रहे हैं अभी, दैट स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, टू इंस्पायर पीपल, टू कम्युनिकेट थिंग्स. लेकिन ये भी ज़रूरी जानना है कि हम खुद को क्या कहानियाँ बोल रहे हैं, व्हाट स्टोरीज आर वी टेलिंग आवरसेल्व्स, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं हम इंस्पायर हो रहे हैं, हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और हमारी एक्शंस कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डाल रही हैं. आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, और कई बार मुझे लगता है हमें एक
बाहर से भी चाहिए होता है कई बार, जैसे कहते हैं ना, पंच टू द गट और दैट आहा मोमेंट और रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है मेरे साथ ये एक्सपीरियंस भी मैंने देखा है कि लोग कहते हैं जी मैडम बहुत हम इनको इंस्पायर करते हैं, हम इनके लिए ट्रेनिंग्स करते हैं, पर कुछ नहीं होता। सो कहीं हम्म, वहां पे, जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल, फिर हमारे पास बार बार स्टीव जॉब्स आ रहे हैं, तो उन्होंने एक बार पेप्सिको के सीईओ को बोला था, ये बहुत फेमस है, गूगल में हर जगह मिल जाएगा, कि डू यू वांट टू सेल शुगर वाटर फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और डू यू वांट टू चेंज लाइव्स, join me and change lives, be a transformation. And he said it was like a punch, for me. And it exactly. was like a aha or wow moment or radical transformation, which was soul stirring, a question which made me Hmm, my soul stir and feel ki, oh, my company, and this is just a war between cola and PepsiCo, and we are just thinking of sugar. No offense to any company, it's just a story we are telling. तो उसमें वो कहते कि अगर मैं किसी को ये कर ही नहीं पाया ऐसे, आई डोंट हैव द पोटेंशियल टू टैप समबडी एंड टू गिव देम फूड फॉर थॉट, तभी भी मैं लीडर नहीं हूँ। अच्छा, तो मेरे में hmm, अंदर है ये देखने की कि ओके दिस गाय हैज इट इन हिम, बट ये कुछ कर नहीं रहा उसके बारे में। तो hmm, देन ही hmm, वाज इंस्पायर्ड टू जॉइन देम, एंड ही सेड मुझे तब लगा कि हो सकता है मैं एक्चुअली सारी जिंदगी शुगर वाटर ही बेचता है, जो कि शायद ही वेंट बैक एंड डिड दैट अगेन। बट द थिंग इज कि कोई एक दैट वाओ मोमेंट और आहा मोमेंट, वी हैव टू इनकैश दैट आल्सो इन आवर लाइफ, वी हैव टू हैव दैट एबिलिटी टू लेट पीपल अंडरस्टैंड देयर पोटेंशियल। कई बार उनको कंफर्ट जोन से निकालना पड़ता है खींच के। दिस इज व्हाट hmm, स्टीव जॉब्स डिड। hmm, सो देन ही वाज आल्सो ऑफ द ओपिनियन कि अगर आप सुनो ही नहीं किसी की, आपको तो लीडर तो बेचारा इंस्पायर कर रहा है, बट यू आर stuck with your narrative that okay this happened with me, and you basically keep talking about your tragedies, your struggles and your backstory, and you do not want to be the author. You don't want to take onus of your life and prove and may suit the narrative to change your story. That's hmm, within the person also. So we have to talk from the other side of the story also, कि हमें उनको ये सिखाना पड़ता है from different, again keep taking so many examples of great leaders, that you have to change your struggle into your strength, hmm, and you have to you know uh, transpire, you have to get transform your life. Are you like a passenger in your own story, or you wish to become the hero of your story? So there is this program I run, be the author of your story. What, as you just said, कि आप listen to what you, the narrative that you tell about yourself. जब हम सेल्फ टॉक करते हैं, हम ज्यादातर अपनी सबसे ज्यादा बड़े क्रिटिक होते हैं, मेरे से नहीं होगा, मैं ये कर ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक हम ये अपने आप को कहानी सुनाते रहेंगे और हम अपनी स्ट्रगल्स को स्ट्रेंथ्स नहीं बनाएंगे, और हम बार बार अपना वो नेगेटिव दोहराएंगे नैरेटिव, तब तक हमारी कहानी में चेंज नहीं आना आ सकता। सो एवरी लीडर एंड ऑफ द डे और एवरी स्टोरी टेलर विल टेल यू दिस ओनली, दैट यू हैव टू टेक ओनर्स ऑफ योर लाइफ एंड मेक इट हैपन, डेयर टू ड्रीम बिग एंड hmm, मेक इट हैपन। सो ये वाली चीज भी एक लीडर को अपनी टीम को दिखानी बहुत जरूरी होती है कि यू हैव इट इन यू एंड यू कैन ओनली डू इट। This I would here I like to bring my story. I was never ever a speaker. I was very very underconfident when it came to public speaking. And even in today's world, when I go to different organizations, people they say this is proven fact कि after death सबसे ज्यादा डर लोगों को public speaking का लगता है, to hmm, fear, the fear of hmm, facing your audience. You would see even people who are doctorates are not able to speak well. hmm, So one of my leaders, she said, yes, you have to hold this conference, which was the national level conference at Lodi Road. And I said, no, ma'am, I can't do it. She said, there's nobody else who can do it. You are the one who has to. And that's where my story transformed from non-speaker to a speaker. I never looked back. I changed my organization. I became the founder, and it's been history now that I would have conducted hundreds, and from schools to colleges to universities to now corporates, that I never ever feared that what will happen. I'll just go there, do my bit, and so this is how we have to at times be shown that by a leader, that you have it, hmm, that punch.
We need it Hmm. from true Hmm. leaders. They can create leaders of their own kind. Do you see that you can build 20 more Prashants, or you can create 20 more Indus, or you can create 20 more Starbucks, startups, because that's another leader who is not leading just by his own vision. He is creating more of his uh, kind, or we say tribe. That's also another aspect of a good leader. Thank you for bringing this up, Induji, and thank you for sharing your story with us. Because you know, couple of things to it. One, it triggered thoughts in my mind of how a leader needs to have a primary objective of bringing the best of each person, understanding the potential of each person, and looking at their strengths and seeking opportunities where they may not understand that I have this strength. But as a leader, you have enough visibility, enough connection जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं with that person to understand कि उसका potential क्या है. और कई बार वो इंसान खुद अपना potential नहीं देख सकता है, but as a leader, it's your responsibility to be aware of that potential and make that merge between the potential and opportunity. क्योंकि उसको opportunity का भी visibility नहीं है, आपको तो नहीं पता होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, कोई conference या ऐसी opportunity आना आ सकती है मेरे रास्ते में. But it was your leader who saw that there is an opportunity. They needed someone to conduct this, and she was connected with you enough to know that you have the potential, even though you did not know you had it. And she I assuming it was a lady. I don't know. Was it Yeah, a lady, lady? my founder. Okay, so she saw this and she could bring that connection together. So I think as a leader, that is very important observation that you need to have with your people. And today you're telling it as a story. तो आप कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, चाहे वो लीडर्स हैं या चाहे वो टीम मेंबर्स हैं या जिंदगी में किसी भी दौर पे कोई भी है, कि क्या मेरे को अपना पोटेंशियल खुद पता है, और अगर कुछ लोग हैं जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मुझे उनका पोटेंशियल सही से पता है और क्या मैं उनको उन अपॉर्चुनिटी से मीट करवा रहा हूँ जो उनके पोटेंशियल पे है. एंड दैट्स सो पावरफुल. और आपकी ये और बात मुझे रिमाइंड इसमें कराती एक है कि हम शब्द और यूज कर सकते हैं कि क्या मैं उनको सही दिशा दिखा सकता हूँ. जैसे हम जितने भी आप महान लोग, महात्मा गांधी की बात करें, अगर हम सारे फ्रीडम फाइटर्स की बात करें, उन्होंने एक दिशा दिखाई तो लोगों ने वो फ्रीडम मूवमेंट. सो टू मेक बिल्कुल. दोज मास मूवमेंट्स हैपन, डू आई हैव दैट इन मी, कि मेरे हम्म. कुछ शब्दों से, या जैसे हम अभी जिनकी भी बातें कर रहे हैं, स्टीव जॉब्स की, उसको पता है कि मैं एक आने वाली जनरेशन की, आई एम लीविंग अ लेगेसी for next हम्म. generation to change. I'm हम्म. giving them one thing which will change their lives, even if they are non-technical people. They still can हम्म. do so much in just one machine. So do you have that ability to transform lives, to make हम्म. change in people's life, to make a difference, and to add that value? तो उसमें बिल्कुल. हम सिर्फ कहानी सुना नहीं रहे हैं, हम उनकी लाइफ चेंज कर रहे हैं, और बिल्कुल. जिसके लिए वो किसी दिन आपको याद करके आपकी कहानी सुना रहे होंगे अपने शो में. सो दिस इज हाउ एज अ लीडर यू हैव टू बी. और एक और मैं कहूंगी कि हमारे आसपास ही लोग होते हैं जो आपको आपके पोटेंशियल से वाकिफ कराते हैं, कि आपके अंदर आपको खुद ही नहीं पता होता. ये स्टोरी टेलर मेरे साथ बहुत रीसेंट 3-4 साल से ही जुड़ा है. मैंने कहा मैं कोई स्टोरी नहीं सुना सकती हूँ, but they said yes, you can, you have that in you. When you move your eyes, you make that connection, it happens. तो ये धीरे धीरे आपको कुछ आपके आसपास हमेशा सुनना चाहिए, लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं. You should बिल्कुल. always be very observant as a employee, as a leader, as any part of the, wherever you are, where whatever you are heading. तो उसमें अगर आपको कुछ कोई कहता है तो reflect and see why is it this, why this is happening, where is my हम्म. purpose taking me. So it will connect and dots get connected to become a story. बिल्कुल. बिल्कुल. और जैसा आपने कहा इनिशियली भी, इसमें ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे आपने जो हमको कहा, वो आपकी ज़िंदगी की एक ऐसी घटना है, एक एक ऐसा पड़ाव है जिसने आपकी ज़िंदगी बहुत तरीके से बदल दी होगी इन टर्म्स ऑफ योर ओन कॉन्फिडेंस ऑन व्हाट आई एम आई केपेबल ऑफ डूइंग. And yes, mostly or a lot of times there are others who see that in you, but not every time will they communicate it to you directly on the face. तो जैसा आप कह रहे हैं, एक अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि मेरे बारे में जनरली बाहर क्या बातें होती हैं, किस चीज़ की तारीफ़ की जाती है, किस बारे में लोग मेरे से ज़्यादा बात करते हैं, मेरा ओपिनियन किस बारे में जानने की कोशिश करते हैं.
तो आपको लगता है कि यार उसमें कुछ तो मेरे में बात होगी कि दिस इज वेयर आई अट्रैक्ट मोस्ट पीपल टुवर्ड्स मी, सो यू स्टार्ट बिल्डिंग योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। लेकिन आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है इज टू रिफ्लेक्ट ऑन इट, उसको बस फेस वैल्यू पे ले मत लीजिए, क्योंकि बहुत बार ये भी हो सकता है कि जो वो कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हो वो शायद गलत कॉन्सेप्ट दे रहा हो। तो यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन इट इनफ टू अंडरस्टैंड कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या इसमें एक्चुअली मेरे को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। I think this is where authenticity comes into picture, because a lot of times stories get related to the word in authenticity या बनावटी या बस बनाई गई है to manipulate or to create something around, you know। बहुत बार बोलते हैं यार कहानियां बनाई जाती है, बस कभी लोगों को भड़काने के लिए कहानी बना दी, कभी लड़कों को चढ़ाने के लिए कहानी बना दी, कभी किसी को बस ऐसे ही कुछ भी फील कराने के लिए एक कहानी बना दो, उसको ऐसा ऐसा बोल दो तो वो ऐसा सोचने लग जाएगा। It's very important as a leader to understand that there needs to be authenticity in your communication. There needs to be authenticity in what you are sharing with your audience. That is when that honest connection will happen. So don't look at storytelling as a manipulative method of कि मैं क्या बोलूं जिससे जो होगा, कहाँ से बनाऊं, क्या ऐड कर दूं मसाला जिससे उनको ये लगने लगे। उस चीज को कैरी करना, क्योंकि मैंने ये होते हुए देखा है, उसका इम्पैक्ट होता है। आई हैव सीन पीपल बिल्डिंग स्टोरीज व्हिच आर नॉट ट्रू एंड स्टिल मेकिंग एन इम्पैक्ट। But more than making an impact, the negative of it is the toll that it takes on your personality, because psychologically आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, but you are playing with your mind, you're playing with your brain, and you're constantly under pressure of building manipulative stories which will do nothing but screw up your mental health। हम mental health के बारे में starting में बात कर रहे थे। आपको लग रहा होगा कि I'm getting very good at building manipulative stories, but what you're not understanding in the long run, you are manipulating your mind and your mental health will get deteriorated over time। So the best way to do things with ease and grace is to be authentic। ऑथेंटिकली अपनी ज़िंदगी की कहानी को देखिए, ऑथेंटिकली लोगों से फीडबैक लीजिए, ऑथेंटिकली अपनी ऑडियंस को समझिए, उनसे कनेक्ट कीजिए और ऑथेंटिकली उनके साथ वो कम्युनिकेट कीजिए जो आपको लगता है उनको इंस्पायर करेगा, उनको मोटिवेट करेगा, उनका बेस्ट सामने लाएगा, उनका पोटेंशियल सामने लाएगा। आई थिंक दैट ऑथेंटिसिटी इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टोरी टेलिंग। उसके बारे में आप पहले बात कर चुके हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दैट बैक सो दैट इट गेट्स इट्स ड्यू इम्पोर्टेंस, दैट इस पूरी चीज में ऑथेंटिसिटी बिकम्स द प्राइमरी ड्राइवर। उसके बिना कुछ भी रियल नहीं होगा, सब कुछ मोमेंटरी होगा, आज होगा कल नहीं होगा। लेकिन अगर ऑथेंटिसिटी है, इट विल सस्टेन, इट विल रिमेन विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। जी। ग्रेट। तो इंदु जी, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहा। आई थिंक यू नो वी स्पोक टू पीपल अबाउट लीडरशिप, वी स्पोक टू पीपल अबाउट स्टोरी टेलिंग, we gave them various things that you need to consider about storytelling to build that craft in yourself. We made people understand what a good leader is. We made people understand how they can use stories in leadership to get the best out of their people, to understand their people, to inspire their people, whatever objectives you have for your people. And you said empathy, connection, authenticity, these become very important pillars of storytelling। हमने साइकोलॉजिकल सेफ्टी के बारे में बात की कि आप खुद को क्या कहानी बोल रहे हैं, खुद से क्या कहानी कह रहे हैं, ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, so that your self concept becomes very clear about yourself, that's based on the stories that you're telling yourself। So become aware of what stories you're telling yourself as well। तो अब जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे that you know if there is a leader who's telling you, okay Indu ji, you know I understood the power of storytelling, I understood how important it is for me as a leader to have the craft of storytelling, I want you to tell me one or two important things that I need to consider if I want to become a good storyteller in the time to come। मेरे दिमाग में वो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? Thank you for the wonderful question and thank you for this whole meaningful conversation. I'm sure it will add some value and bringing breaking the myths around storytelling. So, if I have to give you just three punches, I would say of storytelling, जो मैंने खुद ने सीखे हैं कि tell the right story to your people, tell the right story, and tell your story right. So it is Nice। tell the right story and tell your story right. First point in your story should be beginning should be trigger event. Where did you start? Your backstory. Then where did your life transformed?
Like in my case, I became the founder. Then life lesson, what have I learned from my own journey? Or every leader should be able to, in the end, able to inspire people, to motivate, so that they can get inspired, they learn from your story to imbibe and bring a change in their own life, in their existing struggles, so that they can Hmm. also see or visualize that dream that I can do it too if she could do it. Great. I hope I Thank you so much answered your once question. again. You did, and thank you so much for as I said in my introduction, talking to you in the pre-show conversation also felt so easy. I felt there is a lot of mutual respect. There is a lot of ease in talking to you, which is very important. I think, also a very important part of storytelling, that your audience feels at ease. I, as your audience, definitely felt a lot at ease. You communicated very clearly. I got your messages very clearly, and I love the tone that you use in your conversation. It's very soothing. It does not build any kind of a pressure or aggression. So thank you for making us feel at ease. Thank you for sharing your life wisdom and your knowledge with us. And thank you for your time today, Induji. And everyone in the audience, thank you so much for being who you are. Thank you so much for giving the love that you're giving this conversation and this show. And I will try my best to bring in as many insights as possible for the world of leadership, from from the overall world of life, for us to become better people, for us to become better leaders, so that we can serve ourselves, our lives, and society in the lifetime that we have here. जितने भी साल हैं उसमें कुछ अच्छा करके जाएं. I think that's what I purely and truly believe in. Thank you so much for your support once again, and I shall see you next Saturday once again at 11 a.m. with another insightful guest, with another insightful conversation. और हमको ज्वाइन कीजिएगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, हमको कुछ सीखने को मिलेगा, और मिलके कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे. On that note, thank you, Indu ji, once again for your time, and All the thank you best, everyone in the Prashant. We audience. keep transforming lives. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ऑडियंस आपका भी. अगली सैटरडे मिलते हैं फिर से 11 बजे. टेक केयर. गुड बाय.